प्लूरल सिंगुलर फॉर्म आम खाली पढ़ी सारी आज आम आमर जो कोर्स रे अच्छे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आमर जो इनविटेशन टू इंग्लिश 4 जो चैप्टर रहा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आज से काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन विषय रे डिस्कस करवा आम ठीक अच्छे सो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन ठीक अच्छे ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन आग को जीवा आगु मु तुमको गोटे जिनस खाली क्लीयर करदेवाई चाहूँगी नाउन रो गोटे जिनस रहा जेंडरटा नाउन रो जेंडर विषय में कही नहीं आम नाउन रो नंबर विषय पढ़ले जेंडर विषय भी जाना आवश्यकता अच्छी जेंडर विषय सो इन इंग्लिश इंग्राजी रे यू नो देर आर 4 जेंडर इंग्लिश नाउन हैज 4 जेंडर जेंडर कहले लिंग पिले जो थे तो जेंडर डेफिनेशन जदि आम देखा द डेफिनेशन ऑफ जेंडर कैन बी यू नो described as gender is the formula in which or by which we can you know divide the noun as a male or female गोटे मेल कि फीमेल हिसाब से जो आम भाग करवा से जो प्रक्रियाटा रोचे आम जेंडर बोली कहवा लिंग निरूपण बोली कहवा ठीक अच्छे तो नाउन हैज 4 जेंडर नाउन हैज 4 इंग्लिश नाउन स्पेशली इंग्लिश नाउन हैज 4 जेंडर कौन कौन व्हाट आर दोज 4 जेंडर लेट मी टेल तापर आम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस करवा सो जेंडर ऑफ नाउन जदि आम देखा नंबर 1 हूँ तुम मस्कुलिन जेंडर MASCULINE मस्कुलिन नंबर 2 हूँ फेमिनिन FEMININE फेमिनिन then number 3 is you know common gender and number 4 is your neuter gender NEUTER so these are the 4 gender इंग्लिश रो 4टा जेंडर गोटे है मैस्कुलिन आ गोटे फेमिनिन आ गोटे कमन आ गोटे है न्यूटर तो एमानकर ओडिया जदि आम देखा मैस्कुलिन कहले पुलिंग देन फेमिनिन कहले स्त्रीलिंग एंड कमन कहले साधारण माने उभय यू कैन से उभय एंड न्यूटर कहले क्लीबलिंग न्यूटर कहले क्लीबलिंग ठीक अच्छे तो ये पिले मैस्कुलिन कहले पुलिंग मैस्कुलिन स्टैंड फॉर मेल इन शॉर्टकट यू कैन से मैस्कुलिन स्टैंड फॉर मेल फेमिनिन स्टैंड फॉर फीमेल and common gender stand for both male and female and neuter gender stand for non-living things ठीक अच्छे फॉर एग्जांपल masculine gender कहले masculine होची जेमिति you can say man son then you can say brother father these are masculine gender पुरुष मान को सूचाए जोटा ठीक अच्छे से भाया फेमिनिन कहले जेमिति आम जानिथिबा फेमिनिन कहले कौन कौन हुआ फेमिनिन कहले तुम जमी मदर सिस्टर डटर ग्रैंड मदर ठीक अच्छे दीज आर व्हाट योर फेमिनिन जेंडर तापर आम जदि कॉमन जेंडर को जीवा इफ वी लुक एट कॉमन जेंडर रे कौन हम कॉमन जेंडर रे जमती टीचर कहले आम तो कहूना ना लेडी टीचर कि जेंट्स टीचर बोली कहे कि टीचर स्टूडेंट प्लेयर दीज आर व्हाट डॉक्टर these are common gender एमाने होचंती common gender yes children also yes मानस सेही भलिया आमे जदि न्यूटर जेंडर को जीवा न्यूटर जेंडर जेमति मो एटी चॉक इज योर न्यूटर जेंडर देन इरेजर इज योर न्यूटर जेंडर बुक इज योर न्यूटर जेंडर शर्ट इज योर न्यूटर जेंडर पेन इज योर न्यूटर जेंडर ए सब कौन न्यूटर जेंडर क्लीबलिंग माने जो मानकर जीवन नाही से माने यू कैन से द थिंग्स वस्तु ए जिनस सब एम होती कौ जेंडर न्यूटर जेंडर तो यहाँ थिला लिंग जेंडर तो बर्तमान जीवा पिले आमे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को तो पिले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन सिंपली आमे जदि देखिबा काउंटेबल कहले जो नाउन को आमे गणी पारिबा काउंट कहले गणिबा सो ऑल द स्टूडेंट
मे आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू लाइक द क्लास को लाइक करदा पिले। सो कौन अच्छी काउंटेबल कहले जोड़ा गणी हम जहाँ को आम गणी पारिबा ठीक अच्छे काउंटेबल। आउ अनकाउंटेबल कहले कौन बिले अनकाउंटेबल कहले जोड़ा गणी हब नहीं गणी हब नहीं जोटा गणी हब नहीं सेटा होची अनकाउंटेबल ठीक अच्छे पिले। सो काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड and uncountable nouns are those nouns that cannot be counted. So if you look at the book's definition जदि बही रे थिबा डेफिनेशन को देखिबा हमें ताले कौन हम काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड एंड आल्सो पब्लिश्ड एज ए यूनिट ठीक अच्छे। सो काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड आल्सो पब्लिश्ड एज ए यूनिट एंड अनकाउंटेबल नाउन कौन uncountable noun होची uncountable nouns are those nouns which cannot be counted and also can be published as a unit गोटे यूनिट हिसाब रे हम ताको कहि परिबा नै आउ काउंटेबल नाउन ताको गोटे यूनिट हिसाब रे भी कहि परिबा एवं गणी परिबा ठीक अछि पिले। वर्तमान कथा रहिला लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन जेमिति काउंटेबल नाउन अच्छा बहुत सहज प्रक्रिया whether noun is countable or not if you want to know it जदि आम जानिबा चाहू से जे noun टा countable ना uncountable whether the noun is countable or not if you want to verify it then we can take an example like the shortcut. I am telling the shortcut. What happens, look at this, suppose cat is there, cat, this is an example of countable noun. तो मु केमती जानिबे एटा काउंटेबल ना नहीं सो सिंपल सो इजी फार्मूला जदि एस जो नाउन रे प्लूरल कला बेले आम एस एस लगे प्लूरल करि पारुचे दोज नाउन्स आर काउंटेबल मन रहा जेमती मु कैट को कौन करी कैट्स लिखिदेवी बट three cats yeah Brahmer yes 3 cats if I'll write 3 cat no it's wrong so it would be 3 cats so this is what countable but मु वर्तमान ने भी water मुनेली water कहले कौन पिले पानी water को मु waters करी पारी भी की लिखि पारी भी की waters बोली लिखि पारी भी की लिखि पारी भी नहीं that means it is uncountable एटा कौन अनकाउंटेबल। तो सिंपलेस्ट फार्मूला है काउंटेबल बोली जानिबा केते बेले जेते बेले इफ वी कैन द नाउन कैन टेक एस if we'll put s or es with the noun if the noun agree that is countable and if the noun don't agree with s or es that is uncountable so simple। तो से भलिया किछि एग्जांपल आमे जदि देखिबा किछि उदाहरण आमे जदि देखिबा जेमती ब्रेड तापर मिल्क ब्रेड टा भी पिले ब्रेड टा भी मन रखिया ब्रेड टा भी अनकाउंटेबल नाउन से भाया ग्लास पेपर ग्लास देन पेपर आउ कौन आउ अच्छी जमती नहीं पार तुम कौन आउ गोटे या भितर आउ किछि रहिला पिले जंती यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक एनी प्लूरल फॉर्म्स एक्सेप्शन इन सम स्पेशल केसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू राइस फ्लोर राइस थ्रू फ्लोर होची राइस फ्लोर सो दीज आर ऑल व्हाट अनकाउंटेबल नाउन। तो वर्तमान देखिबा तार यूज सब आमे जानि गले यू अनकाउंटेबल नाउन आउ काउंटेबल नाउन कोन वर्तमान आमे देखिबा द यूसेज तार व्यवहार सब कोठी कोठी रोची। Sound problem is there? I don't think sound problem is there. Now let us go to the usage of vyavahara, usage of countable noun, uncountable uses of countable and uncountable noun.
काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन रो व्यवहार वर्तमान देखिबा। तो प्रथम कथा, पोस्टली द क्वांटिफायर्स परिमाण सूचक शब्द सब। क्वांटिफायर्स कहले परिमाण सूचक शब्द। क्वांटिफायर्स सच एज सम, ए लिटिल, then a lot of etc are used with uncountable noun. क्वांटिफायर्स अनकाउंटेबल नाउन सहित क्वांटिफायर्स व्यवहार हुए। क्वांटिफायर्स कहले कौन कहली मु तुमको, परिमाण सूचक शब्द। क्वांटिफायर्स कहले क्वांटिफायर्स लाइक यू कैन राइट QUANTIFIERS क्वांटिफायर्स परिमाण सूचक शब्द। लाइक शोम, a little, then a lot of, these are all quantifiers. These quantifiers are used with what? Yes, uncountable noun. मन रखिबा, अनकाउंटेबल नाउन रो क्वांटिटी जणेबा पई आमे कोन व्यवहार करथौ, क्वांटिफायर सब व्यवहार करथौ। लाइक सोम, ए लिटिल, देन ए लॉट ऑफ। फॉर एग्जांपल जदि नेबा आमे जदि उदाहरण देखिबा पिले कोन हबो, जेमति मदर गेव मी सम मिल्क। मदर गेव मी सम मिल्क। ये मुझे कौन कहली, मिल्क आगु कौन लगेली, सोम लगेली। मदर गेव मी सोम मिल्क। सो या आई कैन से दैट मिल्क इज योर अनकाउंटेबल नाउन। अनदर एग्जांपल, कैन यू बोरो ए लॉट ऑफ राइस फ्रॉम योर मदर? Yes, a few is also a word that can be used for both singular and plural nouns. That can be used for both countable and uncountable nouns. A few can be used. I'll give you example. About this. So here what happens? The above dark notes. Okay. So here is shown the rounded words is your quantifiers, and these are used before what? Before uncountable nouns in order to express the meaning of a certain quantity of something. And these quantifiers are used with uncountable noun. मन रखिबा, these quantifiers are used with uncountable noun to express the meaning of certain quantity or something. Certain quantity गोटे निर्धारित परिमाण को सूचैबा पई एई सब क्वांटिफायर्स कहा सहित व्यवहार होता है? यस, अनकाउंटेबल नाउन सहित व्यवहार होता है। वर्तमान जीवा रूल 2। इट वाज रूल 1। रूल 2 कौन? 2 नंबर नियम कौन पिले? We can use uncountable nouns without quantifiers in general quantity but not in any particular quantity. So why quantifiers are necessary? The question arises, sir, why quantifiers are necessary? Quantifiers काहे necessary? Quantifiers एइथिपाई necessary जे गोटे पर्टिकुलर क्वांटिटी गोटे निर्दिष्ट परिमाण व्यक्त करबा पई क्वांटिफायर्स ता दरकार होता है। जदि जनरल सेंस रे आमे व्यवहार करूचे ताहले क्वांटिफायर्स रो आवश्यकता न थाए। ठीक अछि पिले, आमे बुझी पारिले क्वांटिफायर्स काहे के लगाउ? आमे गोटे निर्दिष्ट परिमाण व्यक्त करबा पई जेतबे कहू, गोटे माने अनकाउंटेबल नाउन रो गोटे निर्दिष्ट परिमाण विषय जेतबे कहू सेते बेले आमे व्यवहार करथौ क्वांटिफायर्स। जदि आमे सर्टेन अमाउंट विषय कहू ना, गोटे निर्दिष्ट परिमाण विषय कहू ना, ताले क्वांटिफायर्स रो आवश्यकता नहीं जनरल सेंस जेतबे व्यवहार करिबा। अच्छा, से नेक्स्ट एग्जांपल आमे जो जिबा रूल 3, रूल नंबर 3 नंबर रूल, यूसेज नंबर 3 कौन पिले? आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी आर नॉट यूज इन अनकाउंटेबल नाउन्स। मन रखिबा, अनकाउंट एटा गोटे बहुत पिलांकर भूल हुए नॉर्मली जे द वाटर लिखिदेवे, द वाटर, द मिल्क, द वाटर, द मिल्क ए भलिया लिखिदेले कौन है जा पिले भूल हे जीवो। तो नियमटा कौन? आर्टिकल लाइक ए एंड दी आर नॉट यूज्ड इन अनकाउंटेबल नाउन्स। कौन? आर्टिकल लाइक ए एंड दी आर
not used with uncountable noun. uncountable noun कौन हुए आम जाचे इंग्राजी रे तीनटा देयर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश केते आर्टिकल अछि तीनटा आर्टिकल जदि आम आर्टिकल रो नंबर विषय कहवा तीनटा आर्टिकल अछि पहले ए एन एंड दी यही तीनटा आर्टिकल को दुई भाग करा जाइछि नहीं कि आम समस्त जानिथिबा ए आर्टिकल जो रहिला तीनटा आर्टिकल जो रही ए आर्टिकल दुई भाग रे विभक्त कौन कौन बिले गोटे हला ए एन को कहा जाए indefinite article and D is your definite article तो ये आर्टिकल ऊपर गोटे स्वतंत्र क्लास आम करवा डोंट वरी आर्टिकल ऊपर स्वतंत्र क्लास स्पेशल क्लास विल बी देयर डोंट वरी आज आज ये काउंटेबल अनकाउंटेबल सरी गला पर पिले आम ग्रामर को गोटे दिन बंद करिकी आम गोटे पोएम पढ़िबा तापर आम गोटे पोएम पढ़िबा ठीक अच्छे तापर आम जीवा आगु को अच्छा एठी मु जो कहूली कौन आर्टिकल लाइक ए एंड दी आर नॉट यूज्ड विथ यू नो अनकाउंटेबल नाउन यार एक्सेप्शन कौन अच्छी व्हाट आर exception in some special cases mu jemti kohutili in some special cases articles are usually used in countable nouns okay exception in some special cases because articles are usually used in countable nouns karan kono why they are not used because they are used with countable noun somebody was asking me jone ke mate pacharuthila sir kahi ki lage nahi तार कारण है जे बिकॉज these articles are used before countable noun that's why these articles are not used before uncountable noun so simple so easy so but in special cases it can be used so jemti for example ame nei jiba jemti mu lekhili a pen मु लिखी कौन पिले मु लिखली एठी ए पेन बट मु जदि एठी लिखी देबी ए राइस कोटा ठीक कोटा भूल हो पिले which one is wrong which one is right which one is wrong and which one is right who can tell me pen ta countable noun that's why a we can use here but here rice is uncountable noun so I mustn't write a rice yes or no so in this case a pen is the correct answer and a rice is wrong yes or no okay jiba tikke agu ku rule number 4 eta 3 number rule thila bartaman 4 number rule paku ko jiba let us see rule number 4 fourthly sometimes uncountable nouns such as milk bread water chocolate etc which are used as a means of countable nouns if it could be counted because in modern English grammar there are certain fixed expressions which are used to refer to unit of such uncountable things तो rule टा कौन पिले rule कहला sometimes uncountable nouns such as milk bread water chocolate which are used as a means of countable nouns बेले बेले as a means of countable nouns एमाने व्यवहार थामती कहीं what is the reason is that in modern English grammar what happens there are certain fixed expression किछि fixed expression अछि certain fixed expression which are used to refer to unit of such uncountable things जेमिति for example a slice of cake a slice of cake एठी कौन जो एटा this is countable like a loaf of bread एठी कौन जो एटा this is also countable yes ना आमे से भलिया नहीं जीवा a
sheet of paper. A sheet of paper. This is also countable. 2 kg sugar. Yes, Mohan. Very good. Yes, yes. Say a pinch of salt. A pinch of salt. So these units are, when we are taking them as units, they can be come with or compared with the category of countable noun. Getting me? A jar of sugar, a pinch of salt, a cup of tea, bottle of milk, a cake of soap, a bar of chocolate, a stick of chalk, etc. Do you remember this? Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପିଲେ ରୁଲ ନମ୍ବର 5 ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରୁଲ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନିୟମଟା କ'ଣ? What is the rule number 5? The rule number 5 is the noun which can be counted as both countable and uncountable in the following condition. So nouns are there, they can be used as both, means countable and uncountable nouns in some condition. Condition 1. एक नंबर कंडीशन टा कौन देखिबा वर्तमान. What is condition 1? So 1 is nouns are regarded as countable when they refer to particular objects. Rule, write down the rule. What is the rule? The rule is that nouns are regarded as countable when they refer to particular objects. गोटे निर्दिष्ट वस्तु विषय जब रेफर करते से काउंटेबल नाउन हिसाब से निया जाए. फॉर एग्जांपल, उदाहरण स्वरूप, माय ब्रदर रोट ए पेपर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन. माय ब्रदर रोट ए पेपर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन. मो भाई गोटे पेपर लिखिचे को ऊपर साउंड पोल्यूशन ऊपर. हियर ए पेपर इज कंसीडर एज काउंटेबल. सेकंड एग्जांपल, सुवेंदु बट एन आयरन yesterday. सुवेंदु बट एन आयरन yesterday. आयरन कहले कौन पिले? स्त्री बोली आम जो कह बट एन आयरन. बट आयरन कहले लुहा. तो ये बट एन आयरन को हिसाब रे गोटे ऑब्जेक्ट को आम कहूचे, गोटे ऑब्जेक्ट विषय आम कहूचे, माने से आमर जो आयरन ये रोचे स्त्री पेड़ी रोचे ता विषय आम कहूचे. थर्ड एग्जांपल आम देखिबा. सो एटा थिला rule number 1. Rule number 2 कौन? What is rule number 2? The rule number 2 is there. Nouns are regarded as countable when they refer to some material or substances. Regarded as countable when they refer to some material or substances. Material or substances. Jemti newspaper are printed on papers. Look at this. Newspaper are printed on papers. Newspaper paper ऊपर paper रे print हुए. तो एठी कहला पेपर्स टा को हमें गोटे सब्सटेंस करके नहीं छु, गोटे मटेरियल करके नहीं छु. दैट्स व्हाई हियर इट इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन. अगेन यू कैन से आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. आयरन इज, दैट मींस इट इज यूज्ड एज सिंगुलर हियर. यस और नो? सो हियर दे आर आल्सो टेकन एज सब्सटेंसेस. देन रूल नंबर 6. एटा थिला दुईटा रूल. जते बेले आमे सम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल भलिया के भली व्यवहार करिबा. 6 नंबर रूल कोन कहे? व्हाट इज द रूल नंबर 6? सम काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड इन स्पेशल केसेस ए काउंटेबल नाउन्स विदाउट एनी चेंज इन मीनिंग. ओके, सो व्हाट इज दैट रूल? सपोज लुक एट दिस. टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग. टी इज grown in Darjeeling. So here what happens? T is used as what? See, the subject is singular here. Singular. That means we can, we are able to count here. It is taken as a whole thing, you can say. Then this shop sells teas from different parts of India. दुईटा एग्जांपल मनौछि. This shop sells teas. This shop sells teas. मु कौन कहली बिले? एटी टी लिखिछि, एटी टीज लिखिछि, माने एटी सिंगुलर करछि या को प्लुरल करछि, माने काउंटेबल अनकाउंटेबल करि परछु. I can change it. Yes or no? I can change it.
So in these special cases, these are some special cases in which we can use the countable noun, uncountable noun as countable. These are some special cases. Okay, let's see rule number 7. Rule number 7. What is rule number 7? Word which refer to food or drinks. মনে রাখিবা word which refer to food or drinks. ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ food or drinks କ'ଣ ହେବ ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମିଲ୍କ ରାଇସ୍ ଟି ଏଟସେଟ୍ରା ମିଲ୍କ ରାଇସ୍ ଟି ଏଟସେଟ୍ରା ଆର୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରିଲି ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ମନେ ରଖିବା ଆର୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏମାନେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି କୋଉଟା ପିଲେ ଯେମିତି ମାନେ edible things like milk rice tea etc refer to food ଯୋଉମାନେ ଫୁଡ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି but we often use them use these nouns as countables when ordering food or drink in a restaurant or hotel କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ we use them as singular or you can say we use them as countable noun ସେମାନଙ୍କୁ countable noun ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ for example ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ Ram drinks tea in the morning and in the evening. Then second example, I am always fond of rice and milk. Yes or no? So here what happens, the words are countable nouns because they refer to substances. But please get me one tea. If I'll tell, please get me one tea. Suppose I am inside a restaurant. ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗେଟ୍ ମି ୱାନ୍ ଟି ଗିଭ୍ ମି ୱାନ୍ ଟି ଏଠି ୱାନ୍ ଟି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ବିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 8 ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପିଲେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ 8ଲି ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାୟର୍ସ ଲାଇକ୍ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ମନେ ରଖିବା important point of the class much and many are used in negative and interrogative much many କାହା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ହେବେ ଏମାନେ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ସ ରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି much and many these are used with negative and interrogative sentences okay whereas much and many are used in negative and interrogative here much is used before uncountable nouns and generally many is used with plural nouns much is used with uncountable noun many is used with plural noun mone rakhiba kona much is used with uncountable noun and many is used with countable noun morela much ta uncountable noun and many ta countable noun सहित व्यवहार हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दुईटा केस रे is there much water in the pond for example is there much water in the pond like if we'll go to second example we don't find much time to finish our homework look at this example then Nargis have not many books then does Mr. Pradhan has many books in his home these are some example rule number 9 last rule tapare sariba pile last rule ta kono similarly the other quantifiers like a lot of lots of few a few little a little etc are used in the following condition what are those conditions so what are those similarly the other quantifiers like a lot of lots of few a few little a little are used whatever condition I'm going to tell you now first thing mone rakhiba a lot of and lots of are always used in positive or affirmative sentences lot of ketale ବ୍ୟବହାର ହେବ positive affirmative sentence ରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ both as countable and uncountable nouns ଆଉ countable uncountable नाम दुईटा जाक नाउन लगी व्यवहार हम देन फॉर एग्जांपल आम देखि परबा एग्जांपल a lot of people want new device of everything at present
Option question number example number B. Example number B is my brother has a bike which eats a lot of petrol. Example number C, I drink lots of water every day. These are the example. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା little and a little. Little and a little. Little and a little can be used with quantity. Little and a little are used with quantity, whereas few and a few can be used with plural countable nouns referring to number. मन रहा लिटिल ए लिटिल टा क्वांटिटी पाई परिमाण पाई व्यवहार हुए. फ्यू एंड ए फ्यू यूज विथ व्हाट प्लूरल काउंटेबल नाउन्स रेफरिंग टू नंबर. जब बेले कौन सी गोटे नंबर विषय आम कहूबा प्लूरल काउंटेबल नाउन विषय आगे कौन लगे फ्यू एंड ए फ्यू. लिटिल क्वांटिटी लगे व्यवहार हुए. ए लट ऑफ आम आगु पढ़ी सारी छे. सो पिले दिस इज ऑल अबाउट योर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. एतिकी थिला तमर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन विषय पाठ जो तुम इनविटेशन कौन अच्छी इनविटेशन 4 रे थिला. आम आसंता काली आ गोटे कौन प्रोज पढ़ा ना पोएम पढ़ा पिले व्हाट शुड यू स्टडी कौन पढ़ा इंटरेस्टेड तुम प्रोज ना पोएम. प्रोज पढ़ो ना पोएम पढ़ो आसंता काली व्हिच वन पोएम. ओके व्हिच पोएम रमर टेल मी व्हिच पोएम. आसंता काली को पोएम पढ़ा पिले टू माय ट्रू फ्रेंड. ओके दैट मच फॉर द डे. टू माय ट्रू फ्रेंड पढ़ा काली. ओके सी यू इन द क्लास टुमारो. बाय बाय.